क्वेरी रिपोर्ट से कि 700 रुपया हर वोटर पे खर्च हुआ। इसका मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये पैसा आया कहां से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक वॉर करना चाहिए। तो ये काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या। वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ और आंकड़े मैं देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के 2019 2 महीने में जो पॉलिटिकल डोनर्स की डोनेशन आई वो 3,622 करोड़ थी। और ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कैसे आई ये 3,622 करोड़ की सोर्स क्या है? ब्लैक मनी है इसकी सोर्स, राउंड ट्रिपिंग इसकी सोर्स है, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी हमें जांच करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू किए गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप एक डोनेशन 1,000 की दे सकते हो, 10,000 की दे सकते हो, 1 लाख की दे सकते हो, 10 लाख की दे सकते हो, 1 करोड़ की दे सकते हो। लेकिन 99.8% जो डोनेशंस आई वो 10 लाख और 1 करोड़ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो डोनेशंस आई कहां से। ये तो साफ जाहिर है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ही डोनेशंस दे रहे थे। और किसको दे रहे थे ये भी हमें मालूम है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो सभी मालूम है कि किसको डोनेशन दे रहे थे। 95% डोनेशन तो भाजपा को मिली। और इसके पीछे सोच क्या थी वो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम के सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। लेट अस गो बैक। पब्लिक फाइलिंग है। पब्लिक फाइलिंग है। लेट अस गो बैक सर। Please, he is on his next. Let us go back, sir, to 2016. In 2016, the Finance Act was amended. And when the Finance Act was amended, the FCRA, which is the Foreign Contribution Regulation Act, that in turn was amended. And in terms of which a company which was incorporated, which is a foreign company outside India, if it had a 100% subsidiary in India, it could contribute any amount of money. तो पहले तो इन्होंने आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। पहले तो इन्होंने 2016 में तय किया कि 2019 में पैसा कहां से आएगा। पहली बात तो इन्होंने वो तय की, तो एफसीआरए को अमेंड किया। फिर 2017 में फिर फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया और उस अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि द इंडियन कंपनीज एक्ट उसमें संशोधन लाके इन्होंने ये कहा कि जो 7.5% की जो लिमिट है पिछले 3 सालों की, जो अगर की कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है तो उसका केवल 7.5% की डोनेशन हो सकती है। वो इन्होंने डोनेशन रद्द कर दी, वो लिमिट रद्द कर दी। अब वही कॉर्पोरेट सेक्टर कितना भी डोनेशन पार्टी को दो, कोई उसका सवाल पूछ नहीं सकता। ये दूसरा संशोधन इन्होंने किया बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि इनको मालूम था कि 2019 में इलेक्शन लड़ना है और पैसा कहां से आएगा। 2017 में इन्होंने एक और संशोधन किया। वो संशोधन किया कि कोई प्राइवेट फर्म, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दैट वाज एंटाइटल्ड, दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट द डोनेशंस इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। What donation it has given need not be reflected in the profit and loss account. It can just be put under a head of expenditure. तो जो प्राइवेट पार्टी भी है, एसोसिएशन, incorporated, unincorporated, private firms, partnerships could donate any amount of money and don't reflect it in their books of account. तो ये संशोधन जब इन्होंने किए तो नेचुरली जो रोज इनसे काम करवाते थे उन्होंने डोनेशन तो देना ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने और सदन सदस्यों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
Section 137 of the Finance Act of 2017, it is evident that any donation received by a political party through an electoral bond has been taken out of the ambit of reporting under the contribution report as prescribed in under 29C of the Representation of People's Act. आपको मालूम है that under 29C, any donation above 20,000 rupees has to be reported to the Election Commission and the source has to be reported. वो भी इन्होंने रद्द कर दी ताकि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चले कि पैसा कहां से आया. फिर ये बात करते हैं हम काले धन खत्म करना चाहते हैं. Then the Supreme Court also noted, one second, हाँ सारा ही सफेदा मुझे दिखता है, मुझे आपके सामने जो मैं देख रहा हूँ मुझे सब सफेद दिखता है. The minister is capable of responding, don't worry. It cannot be ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provisions of Section 29B of the Representation of People's Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. ये भी पता नहीं लग सकता आपको कि फॉरेन सोर्स से पैसा आया कि सरकारी कंपनी से पैसा आया. ऐसा आपने संशोधन किया फिनेंस एक्ट के द्वारा क्योंकि आपको मालूम था कि भाई पैसे की जरूरत होगी, हर वोटर के पास पैसा पहुंचाना होगा. कैसे पहुंचाएंगे? वो तो तभी पहुंचाएंगे ना जब आपके पास वो साधन होंगे. और साधन कौन देगा? वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जिनको रोज के रोज पोर्ट्स मिलते हैं, जिनको रोज के रोज गैस एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज मिलती हैं, जो आजकल एयरपोर्ट खरीदना चाहते हैं. ठीक है ना, वही सब लोग तो डोनेशन देंगे. और देगा कौन? किसके पास करोड़ों रुपया? उन्हीं के पास तो करोड़ों रुपया है. फिर सर इन्होंने जैसे मैंने कहा सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट अमेंड कर दिया एंड द लिमिट. वन सेकेंड हाफ मिनट. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. Mr. Kapil Sibal is appearing in the Supreme Court to defend the Congress party. Can he argue here? Can he argue here? I am not appeared in this case. No. It's a question of authority. Mr. Kapil Sibal is appearing in the Supreme Court on this matter on behalf of the Congress party. Should he make these comments here? Is the question. I leave it to you. He has raised a point. If you want to respond on that, please. अब बैठ जाए. Sir, He has. The law minister should be He is raising an issue of expression of The law interest. minister must be a little more careful before intervention because I am referring to writ petition 880 of 2017, writ petition 59 of 2018 and writ petition 434 of 2018. I am not appeared in any of these. अरे भाई, रिकॉर्ड मिल जाएगा. कोई जरूरत नहीं, आपको बैठ जाए. You don't want debate. Nothing will go on record. Nothing shall go on record, either electronic or printed. Continue. Kapil, losing time. Continue. Sir, allow me. Party in these matters are not to defend the party's stand. If he says no, I will apologize. Let him say so. What is it? Please. I am just. He is asking, he is capable. In between, why should we get involved? Time is running out of time. Sir, so in the context of all this, the Supreme Court says, and Yes, I put just it on quoted record. that. Let us see. नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ आपने रिकॉर्ड में लाया, छोड़ दीजिए इसे. बिल्कुल. All that we would like to state, and I am quoting the Supreme Court, for the present is that the rival contentions give rise to weighty issues, which have a tremendous bearing on the sanctity of the electoral process in this country. ये मैं नहीं कह रहा, ये Supreme Court कह रहा है. And then the Supreme Court says that all political parties who have received donations through electoral bonds to submit to the Election Commission of India in sealed cover detailed particulars of the donors as against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against such bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. And this information has to go to the Election Commission by the 30th of May. I ask through you, the Minister, whether his party has actually informed the Election Commission of the amount that has been donated by each such donor by the 30th of May or not. Right. And we want that answer Right. from the floor of the House. Sir, having said that, I just go back
to the misuse of to the social media, the way in which the way in which a certain political party has used Facebook, Google, and other social media platforms to target particular voters is something, and the amount of money that has been spent, and it's in crores, is something that we need to be worried about. That's why I said that before we start talking about reforms, we must first analyze what the problem is. Then, sir, the other thing that I wish to say is that apart from all this Facebook, social media and other things, the BJP's officially spent about 1.32 crores on Facebook, but the BJP's unofficial Facebook pages, namely Bharat Ke Man Ki Baat, Nation with Namo, My First Vote for Modi, cumulatively about 4.5 crores was spent. And this organization, the organization that was behind Facebook, was the Association of a Billion Minds. Association of a Billion Minds. And Huffington Post revealed that this shadowy firm was actually created only to support the BJP. Now, sir, and then, of course, as you know, that's only Huffington Post has reported. I am not saying. Now, sir, now you know about Namo TV. You know about the continuous footage of Namo TV. You know that a movie was made. And you know how. And BJP was the top spender on Google, 18.3 crores. Now, sir, what's the role of the media? That's something that we have to be worried about. And I just want to make a statement on that both the BJP and our Prime Minister enjoyed complete media hegemony during the course of this election. If you want a free and fair poll, media hegemony. If you want a free and fair poll, it can't happen like this. Every street, circle, road, petrol station, highway, social media sites, newspapers were flooded with the PM's pictures and his election slogans. The first PM in 70 years who knows where the camera is. He has two eyes, but he knows that the camera is only one. And that one eye will only show what it wants to show. If the media exercised self-censorship and co-option, it would have a free ride, nobody would interfere. From Aadhaar to EVMs, from Doklam to Pulwama, with Rafael in between, the biggest scandals lay buried. From LPG to GDP, from missing planes to missing jobs data, the grandest claims were unexamined. The fake, the frivolous, and the frothy anthem, flag, beef, love jihad, JNU, urban Lakshan, Azan got more airtime. This is the problem. I am only, sir, don't get worried. These are problems. Got more time than the protests, got more time than the protests of farmers and the protest of workers. Agenda setting in studios. Warriors flayed minority ghosts each night. Hindus in danger. Illegal immigrants fostered a siege mentality. Ministers are interrupting. Please, Kapilji, keep your time in mind. You have three speakers. I will sit down whenever you ask me, sir. I am not one of those. No. I just Your party has been given 30 minutes time. There are three speakers. Doesn't worry about that. Please keep that in mind. And what more we are discussing reforms. What happened is one side. No. You have to understand how you move forward unless you know what happened. So all this is within the time, no? 2019 campaign was powered by an indefatigable media machine fueled by fake news and WhatsApp. The relationship between the media and the practice of politics has been transformed. देश बदल चुका है, बदल नहीं रहा. संविधान बदल चुका है, संविधान बदल चुका है. संविधान की नींव में दरार आ रही है. इस बात को आप समझो. इस बात को आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है कि आप चुनाव जीतो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चुनाव जीत गए और संविधान को सामने रखते हुए आप चुनाव जीते. आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई. सर, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. इलेक्शन कमीशन, प्लीज बैठ के कमेंट नहीं करना. दिस इज नॉट फेयर. Sir, the election commission, as I said, is part of the problem. And I tell you why. I'm not attributing any motives. Why is it part of the problem? The election commission, on the 4th of December 2013,
on the 9th of March 2019, issued this advisory, and I'll just read it. It says the Ministry of Defence has brought to the notice of the Commission, Ministry of Defence, that the photographs of defence personnel are being used by political parties, their leaders and candidates in advertisements as part of their election propaganda, and requested the Commission to issue suitable instructions in this regard. Then they say the Commission accordingly calls upon all political parties to advise their candidates' leaders to desist from displaying photographs of defence personnel or photographs of functions involving defence personnel in advertisements or otherwise as part of their election propaganda. This is an advisory that is issued by the Election Commission at the instance of the Defence Ministry. Right? And see what happened in the election? प्रचार हो रहा था और पीछे शहीदों के फोटोग्राफ दिखाए जा रहे थे। ये हम भी मानते हैं। और चुनाव आयोग ने क्या किया? आप कहते हैं कि हम मोटिव की बात नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने क्या किया? पीछे जब ये बातें हो रही थी, जब शहीदों के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सो रहा था ना? नहीं, this is not fair. This is not fair. This is not fair. It is a fact. This is not a public meeting outside. We are in Parliament. We are in Parliament. It's a. So what? Please, you are a very senior person. person. This is the direction during elections. That I am not disputing. That you have got every liberty to quote. This is a direction But saying during that elections. Election Commission sleeping on the floor of the House is not Why? permitted. Why? Did it? All right, sir. Sir, sir, let me ask the question. Did it take action? Did the Election Commission take action? That is for the Election Commission No, to no, decide. I am saying they did not take action. You can do it outside. How can you say that? You don't want to discuss the larger issue of electoral reforms. The first speaker has put it in such a manner, flagging the issues. He did it. And also this side also, he has also explained constructively. If you get into तू मैं and nothing will be achieved. हमारा आपसे एक आवेदन है। आप लोग इच्छा नहीं तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, these are मिनिस्टर जवाब देंगे, उनको बैसाखियों की जरूरत है। आनंद जी आप बैठिए, अब बैठ जाइए। You frame everything as a question. Yes, No motives to be attributed to the we are Election not Commission. attributing any motives. Please, I'll modify my. no motives to be I attributed to the modify Election my Commission, nothing shall statement. go on record. I modify my statement and say I did not see any action from the You Election could have said Commission. it like that. You could have said it Now, like that. sir, I remember way back in 2000, the next issue, and before I come to the EVM, the next issue is criminalization of politics. And I remember way back in 2014, our Prime Minister, at that time he was not the Prime Minister, he said, if I come to power, I have decided that when a new government is formed after May 16, I will set up a committee to find out what cases are pending against whom. I will not discriminate. I will not spare even BJP and NDA candidates. This is what he said in 2014. We are in 2019. Nothing has been done. You know the kind of candidates that were actually part of the election. I know motives. I'm not attributing any motives. We know the candidates. We know some of them won. We also know some of them are in the Lok Sabha. And we know the number of candidates who've got criminal records. And the Prime Minister said, I will not spare anybody. I will not induct them as ministers if they have criminal cases pending against them. These are his statements. Now, if you are really serious about reforms, why don't you start within your house? Move on, next. Now, sir, come to the EVM. That should be. Sir, Everybody should think about our objection to the EVM, our objection to the EVM is You are taking full time of yours. Yes, Afterwards, yes. others will not get. Our objection to the EVM is principled. Our objection to the EVM. No, then everybody will take that plea. No, ye to phir aayegi. If you disturb us, Please. let me. Time must be deducted from our party. सर ऐसा है कि हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो अगर हमारी वो संस्थाएं जिन्होंने संविधान की रक्षा करनी थी वो रक्षा करने मंत्री है, नया मंत्री है। Please. वो अगर रक्षा करनी बंद कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल
for preparing the electoral roll and the conduct of the elections is with the election commission. इस दौरान में जब नोटिफिकेशन इश्यू होती है और परिणाम आते हैं, इस बीच में इलेक्शन कमीशन इज द मास्टर. अब अगर वही संस्था जो कदम उठाना चाहे उसमें अगर विलंब हो जाए तो उसमें फिर संविधान का नुकसान होगा. और बाकी भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां जब हमें लगता है कि संस्थाओं को कुछ इंटरफियर करना चाहिए, कोई डायरेक्शन देना चाहिए, अगर वो नहीं दे तो संविधान का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान होगा. इस बात को हमें सोचना चाहिए. देखिए इसमें कोई हमें आरोप की बात नहीं है, केवल सोचना चाहिए कि अगर हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे और जो संस्थान है वो नहीं करेंगे तो संविधान जाएगा कहां, देश आगे बढ़ेगा कैसे? Please, you have to conclude now. Now on the EVMs, all that we want to say is that the voting machine has become a counting machine. That's the heart of the matter. जब आप ईवीएम पे जाते हो और वोट करते हो, आपको ये तो दिखता है कि हमने वोट इस पार्टी को किया, इस कैंडिडेट को किया. उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो जो वोट हमने उस पार्टी और कैंडिडेट को किया या उसके पक्ष में काउंट हुआ या नहीं. ये तो मशीन काउंट करती है ना. ये प्लीज अरे समझ लीजिए पहले, बिना समझे तो कोई चर्चा होगी. मिनिस्टर विल रेस्पॉन्ड, प्लीज. आप लोग अननेसेसरी ये कर रहे हैं, चिंता मत करो. यू हैव अ कैपेबल मिनिस्टर, ही विल रेस्पॉन्ड. और भी आपका पार्टी का भी है वक्ता और बाकी पार्टियों का भी, सबको मौका मिलना चाहिए. और देर आर कई देश, विश्व में कई ऐसे देश हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते. कोई वजह होगी. यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता, यूरोपियन कंट्रीज नहीं करते, जर्मनी में तो इट्स हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और क्यों? द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. अरे क्या तुम इंटरफेयर कर रहे हो? प्लीज. द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. ये बीमारी सर्वव्यापी है, क्या करूं मैं? The German Constitutional Court in 2009 declared voting through electronic voting machines unconstitutional and unlawful. This they did by insisting that the process of voting should be such as to be easily understood, verifiable and controllable even by the most ordinary voter. Right, Kapil ji, please. That's the question. I have to call the next man. No, one second. So allow me to. 5 minutes. It pains me even to tell you also. नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊं. नहीं, प्लीज कंक्लूड. 5 मिनट की बात है. 5 मिनट तो आपका पार्टी का समय पूरा हो जाएगा. हाँ, तो कोई बात नहीं. 5 मिनट की बात है. तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सोर्स कोड क्या है, किसी को मालूम नहीं कि प्रोग्राम क्या इसमें लोड होता है. जब मैं आपको बताऊं बैलेट पेपर बनता है तो वो तो चुनाव के तुरंत 2-4 दिन पहले ही बनता है ना. तो बैलेट पेपर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनता है, एक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाता है और वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है. और जब वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है तो उसकी कनेक्टिविटी वीवीपैट पे करता है. वो इलेक्शन कमीशन नहीं करती, वो ईसीएल का इंजीनियर होता है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है. और जब वो वहां जाता है वो कनेक्टिविटी वो आउटसोर्स होता है. और आउटसोर्स होता है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता ना इलेक्शन कमीशन को मालूम, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को नहीं मालूम. फिर ठीक है ना. प्लीज भाई तो होने दीजिए, बाद में बाकी लोगों को भी मौका मिलना है. हुआ क्या कि 2018 में नवंबर 2018 में एक मंत्री साहब मुंबई गए और वहां एक इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड का फंक्शन था. वहां उनको एक सवाल पूछा गया कि लगता ऐसा है कि सरकार बैकफुट पे है. 2018 की बात कर रहा हूं. तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 2013 अगस्त-सितंबर में हमने एक सर्वे किया था 2,03,000 लोगों का, और सर्वे से यह निकला कि 2014 की इलेक्शन में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी. मतलब कि उनको पहले ही 8 महीने पहले पता चल गया था. उन्होंने ये बोला यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उन्होंने फिर ये बोला कि अगस्त-सितंबर 2018 में भी हमने ऐसा ही सर्वे किया है. प्राइवेट कन्वर्सेशन को जहां भाषण हुआ उसको कोट करना. कन्वर्सेशन सर, दिस इज नॉट अ कन्वर्सेशन.
It is, please let me place You have it to on. authenticate no, it, No, you one know. second. I'm not making an allegation. I'm not making, sir. I just don't want. I'm stating. He said कि हमने सर्वे किया है. आप ही के मंत्री हैं. हमने सर्वे किया है. मैं आज आपको कह सकता हूं कि 2019 में हमें 297 से 303 सीट मिलेगी. वो तो क्या है, अपना बड़ी अंदाजा अच्छी है, बात, बहुत बड़ी लोगों ने अच्छी अपना बात। अंदाजा किया, क्यों? बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी। अब यार Issue. हमें भी गुड़ बना दो, हमें भी गुड़ बता दो कि 6-8 महीने पहले हमें भी पता चल जाएगा कि कितनी सीट मिलेगी। हमें भी गुड़ बता दो। प्लीज वो हमें भी कनेक्टिविटी दिला दो। राइट वो Right, please. कनेक्टिविटी। नहीं, I have to then name the people. It's not good. Please understand. सर बस मैं एक अपनी थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं, मैं करके कंक्लूड करता हूं। लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा, और इस नजाकत के मोड़ पे हम खड़े हैं, लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा, वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। तेरी सियासत में जो तूने लकीर खींची है, वक्त उसकी तस्वीर तुझको खुद ही दिखाएगा। धन्यवाद, बहुत थैंक यू कपिल जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर प्लीज, if you don't want to have the debate, then I can leave it. That's right. All side. भाई आपको जब आपको सूट होता है आप वहां उंगली दिखाते, वो जब उनको सूट होता है वो उंगली दिखाते। मेरा कहना यह है, सब लोग शांत चित्त से बैठ के be tolerant towards other views, be tolerant towards the mandate of the people, that is democracy. We have to understand that. Professor Ram Gopal Yadav ji. आप निश्चित समय पे बोल सकते हैं, आपको मालूम है, बट 8 minutes है, नो प्रॉब्लम। यस, माइक प्लीज, माइक, राम गोपाल जी का माइक। व्हाट हैपेंड टू दैट? नेक्स्ट माइक, देन लाइट नहीं आ रहे, देख। प्लीज no, I will take care, don't worry. पैसा सारी इन्होंने इकट्ठे किए। The lines are beautiful. बोलने शुरू नहीं किया। Sir, is a privileged member. He is intervening on every He is speaker. not intervening here. He is saying something. Please. This is something very. बोलने के पहले सदन में हम कोई भी तथ्य रखते हैं और कोई भी विषय अगर हम रखते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने बीच में कपिल सिब्बल जी के लिए कहा और उन्होंने तुरंत कहा कि एफसीआरए के मैटर में मैं अपीयर नहीं हुआ। आप बहुत बड़े वरिष्ठ बहुत बड़े वरिष्ठ काउंसिल हैं, जो आपका रेफरेंस था। बट सर, मैं सदन की टेबल पे पीटीआई की 15 जनवरी की न्यूज़ रखता हूं। मेरा ये कहना है, मैं किसी को एलिगेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस न्यूज़ में क्लियर है कि कपिल सिब्बल जी उस मैटर में अपीयर नहीं। You have to authenticate if you are. यस सर। मेरा दूसरा ये कहना है, जिस कंटेक्स्ट में वो एफसीआरए का, ललिता जी मुझे पूरा बोलने दो ना। सर मुझे पूरा बोलने He has got every right to raise a point. मुझे ऐसे मेंबर पूरा बोलने दीजिए। मैं फैक्चुअल रख रहा हूँ सर, मैं सदन की टेबल पे रख रहा हूँ। आप ऑथेंटिकेट करिए, टेबल पे रखिए। लेकिन मेरा एक वाक्य सुन लीजिए, जिस कंटेक्स्ट में वो कपिल सिब्बल जी बोले हैं,
If he is उसका challenging and authenticating. उसका जो उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है मैं टेबल पे रखता हूँ, आपको क्लियर कर दे, मैं किसी ठीक को है, श्री राम गोपाल जी। allegation नहीं करना चाहता। श्री राम गोपाल जी। Under whose role, sir? He cannot play. Then tomorrow we will राम गोपाल lay जी। Then tomorrow we will lay. श्री राम गोपाल जी, बोले करता जी, आप सीनियर हैं। We want the ruling from you. बैठ जाइए। We want the ruling from you. Sir, point of order. राम गोपाल जी। Sir, point of order. What is your Point of order. What is your point of order? The rule I'll get, you cannot table a document without prior notice to the table. You cannot come across like this, it's against the rules of this house. Right. He has So given- they cannot be, he so has it's not asked table. my sir. permission, I have It's given not it to table. him. Right, right. So it's not table. No. Please. No. Derek जी, Derek, please, उनको बोलने दीजिए। No, that's fine. But you cannot come and table a document. Let us wait. Kapil ji, please. See. Please note what I said. I have not appeared in writ petition 880 of 2017 in this order, in this You- court. you have Writ mentioned petition 59434. All those things will be gone through. Please tell me. Everything will be in record and I go have through said it. I have not appeared No in this. discussion is allowed Then why are between you both- making both a the wrong members. statement? I said will I have go not through the appeared in record. this. I will go through the record. I have, this is not. भूपेश जी, भूपेंद्र जी, आप छोड़ दीजिए। Next, श्री राम गोपाल जी। No, please, Kapil Sibal ji, please. I will go through the record. No, you don't worry. Yeah, what all you have said is recorded here. Please, this is not going on record now. What you have said have gone on record. I will go through the record and act strictly as per the record only. Don't worry. I will not make any interpretation also. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।